Dear students, I think in last video we talk about conditional sentences. What is the definition of conditional sentence? Conditional sentences are those English sentences which describe the degree of probability on the basis of condition. Okay, dear students, today we are talking about parts of conditional sentence. How many parts of conditional sentence are there? There are two parts of conditional sentence. First one is called if clause and the second one is called main clause. What is if clause? If clause is also called as conditional clause. If clause को हमेशा conditional clause का नाम दिया जाता है because in conditional clause, in if clause the condition of sentence is occurred. In if clause the condition of conditional sentence is take place. कह रहे if clause को हम conditional clause का नाम देंगे because in the if clause of conditional sentence the condition of sentence is occurred, the condition of sentence is take place. After it is also called as dependent clause because it depend on main clause. इसको हम dependent clause का नाम भी देंगे. What we are? It is also called dependent clause because it depend on main clause क्योंकि ये main clause पर depend कर रहा होता है. After students, what is the third point about it? When if clause is present at first of the sentence, so comma is necessary to put between both clauses. अगर if clause जुमले की शुरुआत में मौजूद है, so comma is necessary between both clauses. तो comma का put करना दोनों clauses के दरमियान में necessary है, लगाना लाजमी है. What is main clause? Main clause is also called as result clause because the result of condition is occurred in it. Main clause को हम result clause का नाम देते हैं because the result of condition is occurred in it, is take place in it. क्योंकि main clause में जो condition का result है भैया, नतीजा है, वो हमेशा मौजूद होता है, हमेशा present होता है. After what is second point about main clause? Main clause is always used after if clause. मेन क्लास को हमेशा इफ क्लास के बाद पुट किया जाता है, इफ क्लास के बाद इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, व्हेन मेन क्लास इज यूज्ड आफ्टर इफ क्लास. अगर इफ क्लास के भैया अगर मेन क्लास इफ क्लास के बाद इस्तेमाल हो रहा है या मौजूद है या लगाया जा रहा है, सो कामा इज यूज बिटवीन बोथ क्लासेस. तब कामा दोनों क्लासेस के दरमियान में लगाया जाता है. इट्स मीन टू पुट कामा इज नेसेसरी बिटवीन बोथ क्लासेस. कामा का पुट करना दोनों क्लासेस में लाजमी होता है. When main clause is used before if clause, अगर main clause को if clause से पहले इस्तेमाल किया जाए, इट्स मीन main clause is put before if clause. अगर main clause को if clause से पहले इस्तेमाल किया जा रहा है, so comma is removed between both clauses. इट्स मीन comma is removed between बोथ क्लासेस. कामा को क्या किया जाता है भैया? कामा को रिमूव किया जाता है दोनों क्लासेस के दरमियान से. ओके भैया, आफ्टर इंशाल्लाह वी टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आर देयर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस